Okay, so people join होना start हो गए. तो I'm gonna start with the revision. जब तक लोग आ रहे हैं हम कुछ ना कुछ discuss करते हैं. So in the last class we talked about constructors. हमने default and parameterized constructors के बारे में discuss किया था. So about default constructors we said normally कुछ default values assign करने के लिए हम use कर रहे होते हैं. So and parameterized constructor in case user कोई values provide कर रहा है तो वो value हम variables को assign करने के लिए use कर रहे होते हैं. So the third thing I mentioned was your copy constructor, and I said कि copy constructor अगर हमें यूज़ करना है तो किस सिनारियोज में यूज़ होगा. So basically एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मुझे कॉपी करनी है वैल्यूज. And I'm not just talking about the assignment operation, I'm talking about कि let's say creation time पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि I want to create an object जो कि इस जैसा दिखना चाहिए exactly. Let's see. तो वो किस तरह से हम कंपाइलर को बता सकते हैं. First let's have a look at that and then हम देखेंगे कि खुद से हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बना सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू टेल द कंपाइलर कि मुझे कॉपी करना है एक ऑब्जेक्ट एट क्रिएशन टाइम, तो there's two ways to that. First is जिस तरह से हम अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से लिख रहे होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू हम पास करते हैं एक object. So let's say I am creating an object over here. So yeah, and मैं variable, so sorry not variable, parameter 10 के बजाय मैं यहाँ पर एक object पास कर देती हूँ. So object 1 हम let's say यहाँ पर पास कर देते हैं. तो हमने object 1 पास कर दिया यहाँ पर. So that is one way to invoke a copy constructor अगर exist करता है. अगर नहीं exist करता तो actually copy constructor is also another thing जो कि compiler by default allow कर रहा होता है, provide कर रहा होता है. So unlike your default constructor जो कि compiler by default provide करता है, but अगर आप अपना कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं तो कंपाइलर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देता, राइट. बट जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है कंपाइलर हर वक्त उसे प्रोवाइड करता है. बट देन विल सी कि अगर कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको खुद से प्रोवाइड कर रहा है देन व्हाई वुड वी वांट टू मेक आवर ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर. उसको हम पहले बाद में देखेंगे, बट लेट्स फर्स्ट सी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इन एक्शन किस तरह से दिख रहा होता है. So that is one way to invoke a copy constructor. ये default copy constructor को invoke करवा रहा होगा. The other way is to do this. So let's say हमने एक और object create किया है, and instead of passing an object as an argument, मैं at object creation time उसको बता दूँ कि मुझे इसको किस object के equal रखना है. Let's say I want to make this equal to object 2. तो इस केस में भी आपका copy constructor कॉल हो रहा होगा. So I'm just writing CC ताकि आपको शो हो जाए, ठीक है. बट कॉपी कंस्ट्रक्टर के सिनारियो में कॉल नहीं होगा. लेट्स से मैं चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 को एक दूसरे के इक्वल करना है. So I want to store object 2 की values inside of object 1. So if I write something like this, object 1 equals to object 2, तो यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा. So कंस्ट्रक्टर्स की एक बात क्या होती है कि they're called at object creation time. तो object 1 and object 2 जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके, तो now उनका कंस्ट्रक्टर दोबारा से कॉल नहीं होगा. So in this case एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में वो कॉपी तो कर रहा है बट यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हो रहा. बट ओवर हेयर ये वाली स्टेटमेंट किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम दिस वन. इट्स डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर ही हम ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन कर रहे हैं एंड उसी वक्त असाइनमेंट कर रहे हैं. सो इट्स सिमिलर टू द स्टेटमेंट जब आप लिखते हो इंट ए इक्वल्स टू 10, तो वो
आप वेरिएबल क्रिएशन टाइम पर ही उसकी वैल्यू उसे बता रहे हो कि इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। बट इफ वी डोंट डू दैट तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इफ आई डोंट डू दैट, if I write something like this, object 5, ठीक है। so यहाँ पर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड देन व्हेन वी डू दिस के ऑब्जेक्ट 5 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1, तो अब यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हो रहा, वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल वैल्यू असाइन कर दे रहा है। तो इन दोनों सिनारियोज में आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होगा। राइट, बट द फर्स्ट टू सिनारियोज, इन दोनों केसेस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा एंड इन दिस केस डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वो एक्चुअल में एक दूसरे के इक्वल कर रहा होगा। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कौन कौन से वेरिएबल्स हैं एक क्लास के अंदर। सो इन दिस केस दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है एक बी है। तो अब वो ये करेगा, वो देखेगा कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट 3 है एक ऑब्जेक्ट जो कि हमें क्रिएट करना है और उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी डालनी है, ऑब्जेक्ट 1 की डालनी है। तो वो देखेगा ऑब्जेक्ट 1 का जो ए है उसके अंदर क्या वैल्यू है, ऑब्जेक्ट 1 का जो बी है उसके अंदर क्या वैल्यू है। तो ए की वैल्यू को वो ऑब्जेक्ट 3 के ए में कॉपी कर देगा, बी की वैल्यू को वो ऑब्जेक्ट 3 के बी में कॉपी कर देगा। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, सब ये जो हम काम यहाँ पर कर रहे हैं ए इक्वल्स टू अंडरस्कोर ए वाला, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या कर रहा होगा, जो भी, तो लेट मी राइट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर हियर, एंड देन विल कमेंट इट आउट एंड देन हम उसको रन करके देखेंगे कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बट बिफोर दैट, इतना सारा जो मैंने बोला है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट आप वो पूछ लें जब तक मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड लिख रहा हूँ। Okay, so nobody has typed anything so far, so I'm assuming कोई question नहीं है। एंड अगर नहीं है तो इट्स फाइन, लेट्स कंटिन्यू। जो हमने अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, सो जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है इट वुड लुक लाइक दिस। तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 के ए की वैल्यू आ रही होगी एंड बी की वैल्यू आ रही होगी उनको साइन कर देगा वो इनटू ए एंड बी। तो जस्ट कॉपीइंग फ्रॉम द रिसीविंग ऑब्जेक्ट टू द अदर वन। एंड अगर हम इसको रन करेंगे तो अभी तो हमें कुछ प्रिंट नहीं करके दे रहा होगा, तो लेट मी जस्ट राइट अ डिस्प्ले फंक्शन ओवर हियर ताकि हम इसको कॉल करके देख लें। राइट, सो अब इस फंक्शन को हम एक दफ़ा कॉल करके देख लेते हैं फॉर ऑब्जेक्ट 1 एंड फॉर ऑब्जेक्ट 2। Oh, sorry, not object 1 and 2, object 3 and 4.
So object 3 जो है that is based on object number 1 and object number 1 default constructor के थ्रू create हुआ था, तो उसके पास a and b के अंदर 0 भरा हुआ होगा। मूविंग फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट किया था, तो उसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास 10 जा रही है, तो a शुड बी 10 एंड b के अंदर या तो 0 होगा या तो वायर्स वैल्यू शो कर रहा होगा, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। देन हमने ऑब्जेक्ट 3 एंड 4 के डिस्प्ले कॉल किए, तो वो हमें 0 0 एंड 10 and कुछ और दिखा रहा होगा। So let's see what happens. Right, so first वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हमारे पास 0 0 शो हो रही हैं, सेकंड वाले की हमारे पास 10 एंड कुछ जंक वैल्यूज शो कर रहा है। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट इसने बाद में प्रिंट किया है, इट्स फॉर दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा होगा। I'll comment this out ताकि ये हमें डिस्टर्ब नहीं करे फॉर नाउ। राइट, तो 2 दफ़ा हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है, ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। अच्छा, सो ये तो कंपाइलर हमें करके दे रहा है ऑलरेडी, बट एन इशू अराइजेस जब आप जस्ट नॉर्मल वेरिएबल से हट के किसी और चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास टेस्ट के अंदर कोई पॉइंटर हो या कोई एरे हो या फिर लेट्स से कोई और क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि मेरी क्लास टेस्ट के अंदर है, तो देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट आर पॉसिबल। तो उन केसेस में जो आपका कंपाइलर होता है, इट इज़ नॉट श्योर कि किस तरह से चीज़ों को कॉपी करना है। तो अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस करने जा रहे हैं टू आवर क्लास टेस्ट। तो इसके अंदर मेरे पास a और b दो वेरिएबल्स थे, पर लेट्स से आई वांट टू मेक इट कि b जो है दैट इज नॉट अ वेरिएबल, दैट इज अ पॉइंटर। लेट्स मेक अ इंटीजर पॉइंटर दैट इज b। तो नाउ आई कांट डू दिस एनीमोर, तो इसको मैं अभी फॉर नाउ रिमूव कर देती हूँ एंड इसकी जगह पर हम b के लिए एक इंटीजर के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। So मैंने कहा b equals to new integer. So I'll have to make the same modifications in my parameterized constructor as well, क्योंकि मुझे कोई ना कोई memory allocate करनी है for my pointer. तो यहाँ पर भी हमें same चीज़ repeat करनी पड़ेगी। Right. So now we have a default constructor जो कि इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ एलोकेट कर रहा है। लेट्स से यहाँ पर हम b की कोई वैल्यू भी रखवा देते हैं। Okay, let's say b जो है that is equals to 20, and in this case let's say b is equals to 22. Okay, so अब हम इसको रन करके देखते हैं, does that make any changes, हमारे आउटपुट में क्या चीज़ें शो होंगी। So remember first object create हो रहा है with 0 0, second object create हो रहा है with 10 and random values। तो इन दिस अभी हमारे पास रैंडम वैल्यूज नहीं होंगी बिकॉज हमने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो रहा होगा विद 10 एंड 22, एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिएट हो रहा होगा वो जो है वो 0 एंड 20 के साथ इनिशियलाइज हो रहा होगा। लेट्स रन दिस। अभी जो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वैल्यूज आपको देखने में सेम लगेंगी बट देयर विल बी अ डिफरेंस, एंड अभी हम देखेंगे कि वो डिफरेंस कहाँ पर आता है एंड क्यों आता है। Alright, so I'll need to make some modifications ताकि हम आउटपुट सही देख पाएं। Right, so 0 and 20, 10 and 22. So you'll think कि okay वो values को ठीक से copy कर रहा है, but the problem is कि वो values को नहीं वो values को ही copy कर रहा है, but let me show you something.
ओके, सो मैंने एक इमेज ओपन की हुई है, तो हम जैसे शेयर दैट दिस वन। तो इग्नोर द टर्म जो लिखी हुई है फॉर नाउ, उसको हम डिस्कस करेंगे इन अ बिट। भाई अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि रिमेंबर व्हाट वी सेड कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, एक चीज को दूसरे चीज के इक्वल कर दे रहा है। तो जब वो पॉइंटर बी को पॉइंटर बी के इक्वल कर रहा है, तो एक्चुअली पॉइंटर बी को नहीं इक्वल कर रहा दूसरे के इक्वल, वो क्या कर रहा है, बी को इक्वल्स टू बी कर रहा है। सो व्हेन यू डू दैट बिटवीन पॉइंटर्स, वो एड्रेस को कॉपी कर देता है। बिकॉज रिमेंबर पॉइंटर क्या करते हैं, वो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं टू अ मेमोरी लोकेशन, राइट। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, उसके बी के अंदर एड्रेस स्टोर कर दे रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट 1, जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस को। ठीक है, तो हमने एक्चुअली में वैल्यूज कॉपी नहीं की, सेम एड्रेस जस्ट कॉपी कर दिया है। तो कुछ इस तरह का हमारे पास सिनारियो बन रहा है, इफ यू लुक एट इट, कि ऑब्जेक्ट 1 it has the same value, in this case ये जो 0x करके लिखा हुआ है, let's assume वो एड्रेस है। एंड जब हम कॉपी कर रहे हैं उसको, तो वो क्या कर रहा है, इट्स जस्ट कॉपीइंग द एड्रेस। तो इन दैट केस दोनों चीजें सेम पॉइंट ऑफ मेमोरी को पॉइंट कर रही हैं। तो देर इज नो सेपरेट मेमोरी फॉर ईच ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम वैल्यू शेयर कर रहे हैं। तो हाउ कैन वी चेक कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वी कैन ट्राई दैट। अगर मैं बी के बजाय, पॉइंटर ऑफ बी के बजाय, अस्सलाम वालेकुम मिस, एक क्वेश्चन है। जी जी, जी जी, मिस, ये आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो ए से पहले जो आपने अंडरस्कोर जो डैश आपने पुट करा है उसका क्या मतलब है? ये तो जस्ट मैंने नेम इस तरह का दिया हुआ है ताकि जस्ट पता लगता है कि वो ए के अंदर मुझे ए वाली वेरिएबल को डालना है। उसकी कोई सच मीनिंग नहीं है, वो जस्ट ओके मेरी ओके नेमिंग कन्वेंशन है। ओके, थैंक यू। वैसे नॉर्मली जब हम आगे जाकर दिस का कीवर्ड डिस्कस कर लेंगे तो आई विल स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि फिर हम सेम नाम रख देते हैं डेटा मेंबर्स के भी और पैरामीटर्स के भी। तो अभी हम दिस नहीं यूज कर रहे, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वो जस्ट अंडरस्कोर डाला हुआ है। अच्छा, so there is one question that I did not look at, अभी मुझे दिखा है। So you asked कि हमने constant क्यों लिखा है copy constructor के पैरामीटर के अंदर। तो एक्चुअली जो आपका सिंटेक्स आपको फॉलो करना होता है, उसके अंदर भी ये होता है कि whenever आप कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख रहे होते हो, यू हैव टू प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक पैरामीटर। बट दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख रहे होते हो, आप जो है रेफरेंस ले रहे होते हो उस ऑब्जेक्ट का जो कि आपको कॉपी करना है। सो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये किया हुआ है, राइट। तो हम ऑब्जेक्ट 1 को एज अ रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो ओवर हियर यूल सी हमने एम्परसेंड लगाया हुआ है, राइट। सो एज अ रेफरेंस हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट ए को मॉडिफाई कर दूं यहाँ पर, तो दैट मीन्स ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी टू दिस ऑब्जेक्ट जो कि हमने यहाँ से पास किया था। तो एक्चुअली वही उन चेंजेस को अवॉइड करने के लिए हम उसको एज अ कांस्टेंट पास कर देते हैं। तो लेट्स से बाय मिस्टेक किसी ने गलती से दिस ए के बजाय ऑब्जेक्ट ए लिख दिया, कोई चेंजेस बाद में फिर नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज चेंजेस हम इसको कांस्टेंट भी रखते हैं, ताकि जब कांस्टेंट होता है तो कंपाइलर आपको लाइक उसी वक्त बता देता है कि लाइक यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग जो कि चेंज नहीं की जा सकती। तो यू अवॉइड एनी मिस्टेक्स दैट वे। So going back to this,
I showed you a diagram and right. So same address दोनों वेरिएबल्स के अंदर stored है. So in let's say object one and ये two लिखा हुआ है but let's say ये object three है, right? तो दोनों के भी same memory address को point कर रहे हैं. तो दोनों के पास same information है. तो अगर मैं object one का बी चेंज करूं या मैं ऑब्जेक्ट थ्री का बी चेंज करूं so they'll probably return they'll not probably more like they'll most definitely change each other's values असल में ऐसा होना नहीं चाहिए तो अगर मैं ऑब्जेक्ट वन पर काम कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट थ्री पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए सिमिलरली ऑब्जेक्ट थ्री पर काम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए बट असल में ऐसा होगा नहीं करंट सिनेरियो में तो लेट्स मेक सम चेंजेस एंड सी के क्या होता है अच्छा सो वन वन मोर थिंग मैंने अभी कुछ चीज़ें मॉडिफाई की थी तो ये हमें मेमोरी एड्रेस से प्रिंट करके दे रहा है राइट तो मैं ऑब्जेक्ट वन का डिस्प्ले कॉल करने जा रही हूँ एंड ऑब्जेक्ट थ्री का तो ऑलरेडी कॉल्ड है तो मेमोरी एड्रेसेस पहले देख लेते हैं आर दे पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी एड्रेस और नॉट तो इसको रन किया तो विल सी कि ऑब्जेक्ट वन का डिस्प्ले हम कॉल कर रहे हैं वो हमें ज़ीरो एंड ये वाला मेमोरी एड्रेस दे रहा है सिमिलरली ऑब्जेक्ट थ्री वाला भी हमें सेम ज़ीरो एंड सेम मेमोरी एड्रेस दे रहा है तो अगर मैं ए के अंदर कोई चेंजेस करूं सो एक्चुअली बिफोर दैट मैं कुछ गेटर्स एंड सेटर्स बना लेती हूँ ताकि हम इनको मॉडिफाई करके देख लें तो जस्ट गिव मी अ सेकंड व्हाइल आई राइट दैट अच्छा आई नीड दिस लेटर तो मैं ये बना रही हूँ आई विल टेल यू अबाउट दिस फिर एक्चुअली सेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी गेटर की पड़ेगी चलें खैर कोई बात नहीं मैंने बना दिया इट्स फाइन Okay, so I made a setter and a getter for A. तो ऑब्जेक्ट वन के अंदर से इफ आई मेक एनी चेंजेस टू ए वो हमारे पास ऑब्जेक्ट वन में ही रिफ्लेक्ट हो रही होंगी ऑब्जेक्ट थ्री में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो लेट्स मेक सम चेंजेस टू ऑब्जेक्ट वन सो ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट ए लेट्स से हम 13 कर देते हैं सो इफ आई रन दिस अच्छा अभी वो बी की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा ना तो उसको हम पॉइंटर ऑफ बी कर देते हैं यस did I miss a semicolon somewhere 37 oh यहाँ पे भी रखना था
There we go. राइट सो हमने ऑब्जेक्ट वन का ए मॉडिफाई किया है, वी चेंज्ड इट टू 13, पहले 0 था, तो विल सी के इट्स इट डिडंट इम्पैक्ट आवर ऑब्जेक्ट नंबर 3 जिसके अंदर ए क्या था, 0 था. But if we modify B instead, so let's say object one का B हम change करने जा रहे हैं, B, and let's say इसको भी हम 13 कर देते हैं. So this should not affect object 3, but in truth it will affect object 3, right? So object 1 का A13 हो गया, B13 हो गया. Object 1 का, sorry, object 3 का A, it's still 0, but B भी 0 होना चाहिए, it should not be 13. अब ये इशू जो है हमारा जो अराइज हो रहा है, दैट्स ड्यू टू शैलो कॉपी, वो जो आपको पिक्चर में लिखा हुआ दिखा था, शैलो कॉपी, राइट? तो इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट. तो शैलो कॉपी होती क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. तो शैलो कॉपी इज बेसिकली जो कंपाइलर क्या कर रहा है, इट्स जस्ट कॉपीइंग वन डेटा इनटू अनदर. वो ये नहीं सोच रहा कि ये डेटा किसी और मेमोरी को पॉइंट कर रहा है या नहीं, या लेट्स से ये डेटा किसी एरे को पॉइंट कर रहा है या नहीं. तो कंपाइलर इज नॉट अवेयर ऑफ दैट. वो जस्ट देखता है कि दो वेरिएबल्स हैं, उनको मुझे एक दूसरे के इक्वल करना है, तो वो जस्ट दो एड्रेसेस को एक दूसरे के इक्वल कर देता है. तो अब इशू ये है कि एड्रेसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दैट मीन्स दे आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी. तो अब एक ऑब्जेक्ट 13 मैंने मॉडिफाई कर दिया, सो इफ आई चेंज दिस 10 टू 13, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी 10 13 शो हो रहा होगा इंस्टेड ऑफ 10. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. तो उसको फिक्स करने के लिए वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप कॉपी. अब डीप कॉपी क्या होती है, वो ये कहती है कि बजाय इसके कि मैं एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस के इक्वल कर दूं, आई नीड टू एलोकेट अ सेपरेट मेमोरी फॉर दिस. एंड वो सेपरेट मेमोरी जो है वो हमें शो होनी चाहिए फॉर द अदर वन. तो उसके लिए भी मैं आपको पिक्चर शो करवा देती हूँ ताकि इट मेक्स मोर सेंस. I didn't mean to stop sharing the screen. Okay, so अच्छा दूसरी इमेज है, इट्स नॉट द सेम वन. सो वी सेड कि शैलो कॉपी में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट उनके अंदर लेट्स से पॉइंटर्स हैं, दे आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी. बट डीप कॉपी के अंदर हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पॉइंटर इक्वल टू अनदर पॉइंटर, हम कहते हैं कि ओके एक पॉइंटर मेरे पास जो दूसरे वाला है, आई नीड टू एलोकेट अनदर मेमोरी टू इट. तो इन दिस केस यहाँ पर पी और क्यू के नाम से हैं, बट लेट्स से कि पी एंड क्यू नहीं है, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट थ्री है. तो फॉर ऑब्जेक्ट थ्री का बी, आई नीड टू एलोकेट सम मेमोरी फॉर इट माई सेल्फ, एंड देन मुझे उस बी के अंदर वो वैल्यू असाइन करनी है जो कि ऑब्जेक्ट वन का बी जिसको पॉइंट कर रहा था, मुझे वो वाली वैल्यू असाइन करनी है. तो वो अब हम किस तरह से कर रहे होंगे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ओके, सो अब मैं इस कंस्ट्रक्टर को अनकॉमेंट करने जा रही हूँ ताकि हम इसके ऊपर काम कर पाएँ. सो रिमेंबर ये जो काम हो रहा है दैट इज शैलो कॉपी, क्योंकि हमने एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर के इक्वल कर दिया है, दे आर पॉइंटिंग टू द सेम एड्रेस. तो हमारे पास ये वाले इश्यूज क्रिएट हो रहे थे कि हमारे पास बी की वैल्यूज चेंज हो रही थी जब हम एक ऑब्जेक्ट से चेंजेस कर रहे थे. तो अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई किस तरह से करना है.
तो इफ वी लुक एट आवर अदर कंस्ट्रक्टर्स, उनके अंदर हमने क्या किया था, बी के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट की थी। तो हमने बी के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट की थी। तो ओवर हियर वी हैव टू डू द सेम थिंग। पहले हमें बी के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करनी है। तो न्यू इंटीजर हमने एलोकेट कर दिया। तो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि अब मुझे इस बी के अंदर, ये बी जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, आई नीड टू स्टोर समथिंग ऑन इट। और वहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, वट एवर वैल्यू इज देयर, मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए एक्चुअली हमने ये वाला गेटर क्रिएट किया था। तो आई एम गोना से ओके, बी जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर ये वैल्यू जाके रख दो। और ये वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। अच्छा, अब you'll be wondering or maybe you're not wondering कि हमने यहाँ पर constant क्यों लगाया हुआ है। तो we'll discuss constant पूरा कीवर्ड in detail later also, but for now let me tell you कि अगर कोई चीज़ constant होती है तो in this case हमारे पास जो ये object है that is a constant। तो उसके आप सिर्फ constant functions को कॉल कर सकते हो। तो टेस्ट क्लास के अंदर वी हैव टू मेक अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये वरना हम इसके थ्रू हम इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू कॉल दिस आई नीड टू मेक इट अ कांस्टेंट फंक्शन, अदरवाइज हम इसको कॉल नहीं कर पाएंगे। सो इफ आई रिमूव दिस तो लेट्स हैव अ लुक, वो मुझे एरर देगा कि हम इसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे इसी के ऊपर एरर दे रहा है एंड क्या कह रहा है कि कांस्टेंट टेस्ट को हम नहीं कॉल करवा सकते इन दिस केस। तो आई नीड टू ऐड अ कांस्टेंट ओवर हियर। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ कांस्टेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सॉरी मैं वहाँ नहीं लिख रही हूँ, मुझे यहाँ लिखना था। ओके, राइट। सो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इट कैन ओनली कॉल अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसलिए हमने इस फंक्शन को कांस्टेंट किया हुआ। ओके, सो व्हाट वी डिड वाज हमने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू मेमोरी एलोकेट की। उस मेमोरी एड्रेस पे जाकर हमने क्या लिखा, जो भी वैल्यू थी बी की उसको गेट किया एंड वो वाली वैल्यू हमने जाके इस मेमोरी एड्रेस पर स्टोर कर दी। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास वो इशू नहीं अकर होगा वो जो पहले अकर हो रहा था कि व्हेन आई चेंज दिस बी टू 13 तो वो मुझे ऑब्जेक्ट 3 के बी को भी 13 कर रहा था, उसे नहीं करना चाहिए था। तो दिस टाइम इट वोंट डू दैट। तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 बना, उसकी वैल्यूज क्या थी 0 एंड 20, उसने वो कॉपी कर दी इनटू ऑब्जेक्ट 3। अब ऑब्जेक्ट 1 का हमने ए सेट किया 13, ऑब्जेक्ट 1 का हमने बी सेट किया 13। तो वो हमारे पास अब यहाँ पर शो हो रही है 13 एंड 13 करके। बट हम जब ऑब्जेक्ट 3 के डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, सो ए रिमेन्स अनअफेक्टेड, बी ऑल्सो रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि नाउ दे ऑल हैव देयर ओन मेमोरीज। तो किसी का भी इम्पैक्ट किसी दूसरे के ऊपर नहीं हो रहा होगा। तो दिस इज एक्चुअली व्हाई वी यूज कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि हमेशा हमारे पास डेटा के अंदर जस्ट आपके नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं होंगे। सो हमेशा इन फ्लोट इन चीज़ों पर काम नहीं हो रहा होगा। पॉइंटर्स हो सकते हैं, एरेज हो सकती हैं। तो एरेज के अंदर भी सेम इशू होता है कि कंपाइलर डजंट नो कि एक एरे को दूसरे एरे में किस तरह से कॉपी करना है। तो वो क्या करेगा, एड्रेस को कॉपी कर देता है फर्स्ट इंडेक्स के। तो सेम सेम इशू एज दिस, राइट। तो उसके अंदर फिर आप क्या करना होता है, वैल्यूज टाइट्रेट करके इंडिविजुअली असाइन करनी होती हैं फॉर दैट। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, उसका ही एक टास्क है जो कि मैं अपलोड करूँगी आज। तो वो आपको सबमिट करवाना होगा आफ्टर कंप्लीटिंग इट। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही आपको लिखना होगा। तो बट जो मैंने काम यहाँ पे पॉइंटर के लिए किया है, यू विल बी डूइंग दैट फॉर एन एरे। तो उसके अंदर आप क्या कर रहे होगे, यू विल बी आइटरेटिंग। मैं एक टेस्ट
क्लास प्रोवाइड करूंगी आपको, उसके अंदर एक पॉइंटर एरे होगी. So instead of doing it for a single item, आप पूरे array के लिए उसको copy कर रहे होगे. सही है. So that is something that you have to do. I'll upload मिस the प्लीज task आप into ड्यू here. डेट जो है ना वो थोड़ी मतलब एक्सटेंड कर देगा उसकी. Extend मतलब लाइक अभी तो ड्यू दिया डेट भी नहीं आज. है. जी जी, आप आज की नहीं रखिएगा और ना ही कल की, क्योंकि हमारे पास ना ऑलरेडी असाइनमेंट्स आए हुए हैं बहुत सारे. Sure, sure. थैंक यू. अच्छा, so any questions? मिस कांस्टेंट वाला समझा दें दोबारा. अच्छा, so हमने constant क्यों यूज किया फंक्शन के साथ? That part? जी मिस मिस जब फंक्शन के ये लाइन 38 से जब फिर क्लास में गई थी. Okay, so the thing is कि अगर कोई constant object है आपके पास, तो line number 21 के अंदर you have a constant object test का, right? So if I want to call a function from that object, from a constant object, तो हमारे पास restriction ये है कि एक constant object सिर्फ constant functions को call कर सकता है, किसी और function को नहीं call कर सकता. So that's why मुझे वो function constant बनाना पड़ा था, वरना like otherwise there's nothing wrong with the code. लेकिन if this is not constant, तो वो उसको without constant use कर पाएगा, right? But अगर हमारे पास कहीं पर भी constant ऑब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शंस को कॉल कर पाएगा. लाइक ये एक रूल है, तो आई कांट जस्टिफाई इट कि ये रूल क्यों है, बट यस, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट सिर्फ कांस्टेंट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है. well actually I can justify it, but जब हम कांस्टेंट को पढ़ेंगे तो फिर विल डिस्कस इन डिटेल कि हम क्यों ये रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं. तो कांस्टेंट फंक्शंस आर एक्चुअली समथिंग जिसके अंदर आप चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है एक, इसके अंदर मैं बी की वैल्यू को चेंज नहीं करवा सकती. तो कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई भी क्लास का वेरिएबल होगा, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते इनसाइड ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. तो फॉर एग्जाम्पल, जो सेट वाला फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, राइट? सो गेटर कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है क्योंकि उसके अंदर हम वैल्यूज मॉडिफाई नहीं कर रहे. सो एनी फंक्शन जिसके अंदर आप वैल्यूज मॉडिफाई नहीं कर रहे, उसके साथ आप कांस्टेंट लगा सकते हो, तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा. अच्छा, somebody was asking, let me see. मिस जी जी. मिस आप क्लासरूम पे इन टॉपिक्स के नाम लिख सकती हैं कि रिवाइज कर सकूं बाद में. ये पिछली क्लास में मैं एब्सेंट था और इस क्लास के अंदर जो टॉपिक्स के नाम हो अगर आप लिख लें ताकि रिवाइज कर सकें, या ये अच्छा, कोड तो पे. नहीं, कोड तो है, कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. बट उसके अलावा कुछ चीज़ें तो स्लाइड में मेंशन है. शैलो एंड डीप कॉपी की स्लाइड्स हैं, बट वो आई थिंक नेक्स्ट वीक का पार्ट थी, बट आई वांटेड टू डिस्कस इट विद दिस, तो इसलिए मैंने आज डिस्कस कर ली. मैं वीक 4 वाइज ओके स्लाइड्स अपलोड कर दूंगी, तो यू गाइस कैन हैव अ लुक एट दैट. लेकिन अभी मैं अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि वो यूनिव वाले पीसी में, तो व्हेन वी गेट बैक टू द यूनिवर्सिटी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. ओके ओके मिस. ओके मिस अटेंडेंस एंड कब लेंगे? अटेंडेंस, यस एक्चुअली आप लोग रोल नंबर्स अपने यहाँ पर मेंशन कर दें. एंड आई अंडरस्टैंड टॉपिक इज अ बिट कंफ्यूजिंग, हम इसको फर्दर क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू मिस. मिस क्विज वगैरह का भी देख लेगा आप ना. अच्छा हाँ, क्विज वैसे इस वीक में लेना था, बट अब हम नेक्स्ट वीक में लेंगे. मिस अभी ले अभी लें, ले अभी ले लेना. लें. मिस नहीं अभी नहीं, ले अभी लें नहीं, मिस. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं. अरे मिस. ओके मिस, अल्लाह हाफिज़. चलो, हाँ. मिस नेक्स्ट वीक भी ऑनलाइन होगी? नहीं नहीं, आई हाँ थिंक हाँ नेक्स्ट वीक तो तुम्हारे लिए प्रॉपर ऑनलाइन ही है. क्लासेस हैं. सही से. ऑनलाइन है. नहीं, ऑनलाइन नेक्स्ट वीक प्रॉपर इसमें से क्लासेस ऑनलाइन हैं. लेना है.
So I'm gonna stop the recording right